Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to take up your statement of purpose for ISC English class 11th and 12th. This is that one video which is going to clear all of your confusion regarding statement of purpose, and towards the end मैं आपको अपने student का एक sample statement of purpose भी पढ़ाऊंगा कि आपको किस way में लिखना है, so that you get an in-depth idea on how actually you have to write a statement of purpose. बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं. व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? नाउ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज अ परसुएसिव राइटिंग. परसुएसिव का मतलब क्या होता है? जहां पे आप एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे हो वेर यू आर ट्राइंग टू कन्विंस एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंसिडर यू एज अ कैंडिडेट. ठीक है, सो इट इज अ परसुएसिव राइटिंग विच हाईलाइट्स, टेल्स the academic background, like how you were in your accolades, in your academic endeavors, in your achievements, your motivation and your career aspirations of the candidate. मतलब एक कैंडिडेट के बारे में कि वो academically कितना sound है, कितना अच्छा है, उसने क्या क्या अचीव किया है, reason for his choice of this particular institution and his career goals, his career aspirations. उसके लिए एक statement of purpose लिखा जाता है. Now remember that it is written for in particular seeking admission to a specific course और अ यूनिवर्सिटी. आप किसी कॉलेज के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे या जब आप अब्रॉड भी अप्लाई करते हो पढ़ाई करने के लिए, तो आपको अपना एक डिटेल्ड अकाउंट लिखना होता है, बताना होता है अपने बारे में, लाइक व्हाई शुड यू बी कंसिडर्ड. उसी के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है. आई होप दैट्स क्लियर. Coming to points that needs to be remembered while writing your statement of purpose. First thing first, it is to be written in the first person's narrative. यानी I, me, myself वाला logic लगेगा. Like it has to be from your own perspective when you're writing a statement of purpose. ठीक है? Should have persuasive. Next, very important. आपका statement of purpose should be convincing to the reader कि जब वो पढ़ रहा है, the person should feel that yes, you indeed will be an asset to so and so institution or the organization, and therefore you should be considered. So it has to be in a persuasive tone. At the same time, very formal linguistic has to be incorporated while writing your SOP. At the same time, tone has to be polite and not authoritative. Remember that you are addressing your sample of you're addressing your statement of purpose to a higher authority, and it has to have that polite tonality. So ensure that. ठीक है? एम्पलीफाई एवरी पॉइंट इन अ सेपरेट पैराग्राफ. आपको 6 प्रॉम्प्ट्स दिए रहेंगे एग्जाम में, आपको उन 6 प्रॉम्प्ट्स को 6 सेपरेट पैराग्राफ में ईच एम्पलीफाई करना है, जो कि आपका 2 मार्क्स कैरी करता है. हर एक पॉइंट विल कैरी 2 मार्क्स सेपरेटली, ईच ऑफ देम. एंड देन डोंट फॉरगेट अबाउट योर नेम टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. ठीक है, अपना नाम लिख के कंप्लीट करना होता है. मैं आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा हूं. दिस इज हाउ योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का फॉर्मेट इज टू लुक. नाउ जब भी आप शुरू करेंगे, प्लीज एक फ्रेश पेज के साथ स्टार्ट करिएगा. ऐसा नहीं कि कॉम्पोजिशन 2.5 पेज में कंप्लीट किया तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डायरेक्टेड राइटिंग लिखते लिखते आप उसी हाफ पेज से स्टार्ट कर दो. डोंट डू दैट. स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज, फ्रॉम द वेरी फ्रेश पेज, एंड पेज के सेंट्रल अलाइनमेंट में आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. पहले पुराने फॉर्मेट में होता था, हम लोग लिखते थे टू whomsoever इट मे कंसर्न. अब वो चेंज होके काउंसिल का ये लेटेस्ट फॉर्मेट है एज पर योर आईएससी 2026 जो रिलीज किया है उन्होंने, उससे मैंने उठा के आपको ये बता रहा हूं. आपको सेंट्रल अलाइनमेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेज के एकदम बीच में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है. एंड दैट टू स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपर केस में होगा, यानी सब कुछ ऑल कैप्स में होना चाहिए. इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो. ठीक है, यू कांट राइट लाइक दिस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. आपका 1 नंबर फॉर्मेट में वो लोग काट देंगे अदरवाइज. ठीक है, प्लीज बेयर दैट थिंग इन माइंड. उसके बाद once you write your statement of purpose, you just have to leave a line and start amplifying those points जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा. हर पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने पे 2 नंबर आपको मिलते जाएंगे. एंड मेक श्योर जब आप पैराग्राफ चेंज करें, यू लीव अ लाइन. एंड इवन इफ यू आर नॉट लीविंग अ लाइन, इट्स टोटली ऑन यू. If you do not have a neat handwriting, not a legible handwriting, then advisable line छोड़ के ही लिखना. 6 पैराग्राफ बनेंगे टोटल, एंड टुवर्ड्स द एंड एकदम राइट हैंड साइड में RHS, जब SOP कंप्लीट होगा, राइट हैंड साइड में आपको अपना नाम लिख के खत्म कर देना है. ठीक है, योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विल बी फिनिश्ड. उसके बाद
चलिए, तो मैं आपको एक सैंपल एसओपी रीड कर दे रहा हूं, आप देख लो कैसे लिखना है आपको. देयर यू गो. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. नाउ पहले क्या होता था कि जो प्रॉम्प्ट दिए रहते थे उसको हम लोग यहाँ पे लिख के कोलोन दे के फिर लिखते थे. आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो उसमें जो भी प्रॉम्प्ट्स या लीड्स क्वेश्चन में दिया रहता है, बच्चे उसको लिख के कोलोन दे के फिर स्टार्ट करते थे. अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है. यू डायरेक्टली हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर एसओपी. सो लेट्स रीड इट. I wish to express my sincere interest in pursuing English honors at your esteemed, yani respected institution. I am a focused, goal oriented individual who believes that consistent effort, intellectual curiosity, and optimism, that is positivity, form the foundation of a meaningful academic growth. I strive means I want to push myself to remain grounded in my values while approaching every challenge with determination and positive outlook, that is perspective. So basically first stanza में usually आपको prompt में introduce yourself दिया रहता है. ठीक है, आपको first lead में दिया रहेगा introduce yourself, अपने बारे में कुछ बताइए. ठीक है, so that will be your first paragraph. उसके बाद second paragraph में my inclination means her fascination, her liking. My inclination towards the study of English has developed through a deep appreciation for language as both an art and a tool, one that shapes thought and identity. Like her reason for choosing this particular subject in that particular university or college. ठीक है, literature in particular has always fascinated me for its power to articulate, that is, express emotions, question social realities, and pursue human experiences across time. ठीक है, pursue ही है ना, नहीं preserve, sorry. Question social realities and preserve human experience across time. Through reading endless novels, I have learned to observe the world with sensitivity and interpret it with clarity. This engagement has strengthened my analytical thinking and refined my ability to express ideas with precision. Like the reason why she wants to take up this course. ये हो गया आपका second prompt. तीसरा, आप देख रहे हैं लाइन छोड़ छोड़ के आपको हर एक सेपरेट पैराग्राफ में लिखना है, हर एक पॉइंट को एम्पलीफाई करना है. Beyond academics, I possess means she has a wide range of interests that contribute to my holistic, that is overall development. I am technologically inclined means she's tech savvy as well and comfortable working with digital tools, which allows me to balance creativity with practicality. So in this paragraph, she has written about her strengths, like her positive traits, कि उसमें क्या क्या है, her qualities. ठीक है, I enjoy reading extensively, means she's a hardcore reader, staying informed about global affairs, and these interests have helped me cultivate, develop discipline, adaptability, and a habit of lifelong learning, qualities that are essential for success in humanities. ठीक है, उसके बाद I am particularly drawn to your institution because of its emphasis, like it stresses on, like reason for choosing this particular university, because of its emphasis on intellectual and creative growth. The learning environment and faculty guidance offered by your college will equip me with the critical insight and academic rigor required to excel in English studies and future endeavors, her future journey, her future pursuits. ठीक है, I consider myself as a deserving candidate due to my eagerness to learn, like why she should be considered, that is the next point, to learn, adaptability, and strong communication skills. Along with academic commitment, I bring attributes, characteristics, qualities such as creative writing ability, public speaking, confidence, and a genuine enthusiasm for literature and language. Next, pursuing English honors at your college will be a crucial step in shaping my intellectual journey, like her purpose of this particular institution, intellectual journey and professional aspirations, as I aspire not only to grow individually but also to contribute positively to the academic community of the institution.
I am confident that this program will broaden my perspective, her mental horizons, and prepare me to engage meaningfully with the world. And then, after leaving a line, she has written her name, Shinjani Moitra. So, अगर आपका इस टाइप का टोनालिटी रहेगा विदाउट एनी एरर्स या कुछ भी, देन आपको कुछ इस तरीके से आपका करेक्शन होगा. इट इज रिटन एज FCE. ठीक है. फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 12 मार्क, एक्सप्रेशन 2 मार्क. तो फॉर्मेट पे 1 मिल जाएगा, कंटेंट पे 12 में 12 मिल जाएगा एंड एक्सप्रेशन पे 2 में 2 मिल जाएगा, विच गिव्स यू अ फुल 15 ऑन 15. ठीक है. इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज इजी. बस थोड़ा सा अच्छे से 2-3 बार रीड करो. आपको जिस भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में यू वांट टू राइट ऑन, लाइक आप जो भी परस्यू करना चाहते हो आगे कॉलेज में जाके, फाइंड दैट आउट. एंड आप किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज में जाना चाहते हो उसके बेसिस पे एक सैंपल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रिपेयर कर लो एंड स्टिक टू दैट. आई एम नॉट सेइंग लर्न कर लो उसको, बट उसको 3-4 बार अच्छे से रीड करना, आपका काम बन जाएगा. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड यू आर लाइकिंग माय कंटेंट. If you are, then please don't forget to like, share, subscribe. I'll see you in my next video. Till then, keep smiling, keep studying. Take care. Bye-bye.